Dear students, now we are going to study another scholar of uh, the perspective of mediatization. His name is Nick Aldrey, and he is a sociologist and a professor of media, communications, and social theory in the Department of Media and Communications at London School of Economics. When we talk about his approach towards media and communication, he sees media and communication from the perspective of the symbolic power that has been historically concentrated in media institutions. So he believes that the power of the media institution is much significant when we study the communication patterns in society. His research interest, when we talk about his research interest tries to ask following questions. The first one is how media and communications institutions and infrastructure contribute to various types of order: social, political, cultural, economic and ethical. ये जो प्रोफेसर निक हैं, ये इस चीज़ में इनकी रिसर्च ज़्यादा फोकस करती है कि जो मीडिया और कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, या जो मीडिया एज एन इंस्टीट्यूशन जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कैसे कंट्रीब्यूट करता है ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। वो ऑर्डर सोशल ऑर्डर भी हो सकता है, वो पॉलिटिकल ऑर्डर भी हो सकता है, वो इकोनॉमिक ऑर्डर भी हो सकता है सोसाइटी का। एंड ही accepts the power of traditional media, particularly television and the press, to define political and social reality. ये समझते हैं कि जो हमारे हम जो टेलीविज़न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और जो हमारा प्रिंट मीडिया है, ही इज़ द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन इन द सोसाइटी, और वो पॉलिटिकल और सोशल रियलिटी क्रिएट करता है, और वो जब चाहे किसी भी एक सोसाइटी में लोगों की परसेप्शन चेंज कर सकता है अबाउट अ पर्टिकुलर इशू। वो इशू में भी पॉजिटिवली प्रेजेंट किया जाए एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड में, और वही इशू फिर 5 या 10 साल बाद मे बी नेगेटिवली प्रेजेंट किया जाए बिफोर द पीपल। और दोनों वक्तों में एक तरह से जो है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और आपका जो प्रिंट मीडिया है, वो परसेप्शन क्रिएट कर देता है पॉजिटिवली भी एट वन टाइम पीरियड, एंड देन नेगेटिवली भी एंड अगेन इन द masses. More recently, he has become interested in how a range of institutions associated with media have in the digital age taken over that power. तो आज जब हम बात करते हैं तो मीडिया इज़ नॉट अ सेग्रीगेटेड इंस्टीट्यूशन इन द सोसाइटी, और पर्टिकुलरली जब से एक डिजिटल रेवोल्यूशन आ चुका हुआ है, तो अब मीडिया की जो पावर है वो शेयर्ड है। वो किन के साथ शेयर्ड है? वो जो एक कैपिटलिस्ट सिस्टम है, उसके जो डिफरेंट एक्टर्स हैं, उनके साथ शेयर्ड है, और उन एक्टर्स के साथ मिलकर मीडिया एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है सोसाइटी में। द पब्लिश्ड बुक ऑफ प्रोफेसर निक्स आर मीडिया व्हाई इट मैटर्स, द कॉस्ट ऑफ कनेक्शन, हाउ डेटा colonize human life and appropriates it for capitalism, the mediated construction of reality.